आज के वीडियो में हम देखेंगे काइनेमेटिक्स। लेकिन काइनेमेटिक्स पढ़ने के पहले वेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, क्योंकि वेक्टर, स्केलर्स, इसकी यूजेस आएंगी काइनेमेटिक्स में। तो क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज टू टाइप्स के होते हैं मेनली। फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटीज। हम देखें स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है। स्केलर क्वांटिटीज, क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप के हुए, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। So scalar quantities, definition of scalar quantities is those physical quantity which have only magnitude. Those physical quantity which have only magnitude but no any direction, is called scalar quantities. Those physical quantity which have only magnitude but no any direction, as for example distance 2 meter, 3 kilometer, 4 meter. So it has only magnitude, it has no any direction. So distance is a scalar quantity. Speed 4 meter per second, 3 meter per second, 5 meter per second, 10 meter per second. So it has only magnitude. So it is a scalar quantity. Mass is a scalar quantity. It has also no any direction. Time is a scalar quantity. So those physical quantity which have only magnitude but no any directions are called scalar quantities. Next is vector quantities. Vector quantities, those physical quantities which have both magnitude as well as direction. Magnitude as well as direction. जिस फिजिकल क्वांटिटी में दोनों ही हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज. Those physical quantity which have both magnitude as well as direction. मीन्स मैग्नीट्यूड तो दोनों में होगा, स्केलर में भी होगा और वेक्टर में भी होगा, लेकिन वेक्टर में एक चीज एक्स्ट्रा होगी और वो होगी डायरेक्शन. एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, डिस्प्लेसमेंट. देयर इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी is a vector quantity. Acceleration, rate of change of velocity. Acceleration means rate of change of velocity. It is also a vector quantity. So there are two physical quantities, scalar and vector. And those physical quantity which have only magnitude is called scalar quantity, and those which have both magnitude as well as directions are called
vector quantities. Now we will see about representation of a vector. Representation of a वेक्टर क्वांटिटी को कैसे या किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? तो अ वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड vector quantity is represented by a straight line. A vector quantity is represented by a straight line with arrowhead over it. वेक्टर क्वांटिटी को स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके ऊपर एक एरो हेड लगा होता है. द लेंथ ऑफ द लाइन, या द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड. जो लाइन की लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी एंड एरोहेड gives the direction. Arrowhead gives the direction. Like suppose there is a velocity which is a vector quantity, so we will represent in this side. So a straight line with arrowhead over it, the length of the line gives the magnitude and arrowhead gives the direction. So a vector quantity is represented by a straight line with arrowhead over it. The length of the line gives the magnitude and arrowhead gives the direction. Next we will study about position vector. Position vector. A vector which gives position vector, a vector which gives position of an object. A vector which gives position of an object. A vector which gives position of an object with reference to the origin. With reference to the origin. A vector which gives the position of an particle or of an object with respect to the origin or with reference to the origin of a coordinate system. Of a coordinate system. Of a coordinate system is called position. Is called position vector. Suppose this is the coordinate system and O is the origin, x-axis and y-axis. Suppose the position of the particle P is here, so the coordinate of P will be x comma y. The x coordinates of point P is x and the y coordinate of point P is y. So its position will be given by
OP vector. OP vector, its position will be given by OP and it is represented by vector R. So we will write in this way, position vector OP equals to vector R. So this is the position with respect to the origin in a coordinate system, in a rectangular coordinate system. This coordinate system is called rectangular coordinate system having x-axis and y-axis. The position of particle P is x, y, which position is given with reference to the origin OP equals to vector R. Position vector OP equals to R. If there is a three-dimensional coordinate system, origin O, X, Y, and suppose this is Z, and there is a point P. So its position be given with reference to the origin R, and the coordinates of P will become X, Y, Z. So R vector in two-dimensional coordinate system is given by X I cap plus Y J cap. I cap and J cap are the unit vector in x direction, in y direction. In x direction, the unit vector is represented by I cap, and in y direction, the unit vector is represented by J cap. Unit vector is a vector which have unit magnitude, and unit vector gives the direction. In three-dimensional coordinate system, this position vector R is given by x I cap plus y j cap and plus z k cap. I cap is the unit vector in the direction of x, j cap is the unit vector in the direction of y, k cap is the unit vector in the direction of z. So this is what about the position vector. The position of a particle with reference to the origin. Position vector means the position of a particle with reference to the origin. In two-dimensional system, two-dimensional coordinate system or rectangular coordinate system, R equals to xi cap plus yj cap. In three-dimensional coordinate system, R equals to xi cap plus yj cap plus zk cap. Now, displacement vector. Displacement rectangular coordinate system O, X, Y. Suppose at time t. Suppose at time t, the particle is at point P. At time t, the particle is at point P. And after time t dash, and after time t dash, the particle reaches to point Q. So these two are the position vectors, OP and OQ. They are the position vectors. Position vector OP is represented by R1 and position vector OQ is represented by vector RQ. Then line joining the tip of these two vectors and making the arrow from initial vector to final vector is called displacement vector. And displacement vector, this PQ is the default displacement vector. OP is the position vector, OQ is also position vector, OP is given by R1, OQ is given by R2. Then line joining the tips of these two vectors and the arrow head from initial vector to the final vector is called displacement vector, and displacement vector is represented by delta R. So the direction of these two vectors are same. The direction of vector OP and the direction of vector PQ are same, but the direction of vector OQ are opposite. So we will write in this way: OP vector plus PQ vector
is equals to OQ vector, and we have to find the displacement vector, means we have to find vector PQ. So vector PQ can be written as OQ vector minus OP vector, and OQ vector is R2 and OP vector is R1, and PQ vector is given by delta R. So delta R vector equals to R2 minus R1, where R1, R2 is the final vector, R1 is the initial vector. So this is the displacement vector, which is represented by delta R, and delta R equals to R2 minus R1. At time t, the position of the particle is P. At time t dash, the position of the particle is Q. And PQ is the displacement vector, and arrowhead always mark from initial vector to the final vector. Now we will discuss about the modulus of a vector. Modulus of a modulus of a vector. It is also called mod of a vector. So modulus of a vector means the length or magnitude of that vector. Modulus of a vector means the length or magnitude of that vector. Modulus of a vector means the length or magnitude of that vector, and it is a scalar quantity. It is a scalar quantity. It is a scalar quantity. Modulus of a vector is a scalar quantity. So, suppose there is a vector A, its modulus is given by mod of vector A. This side, mod of vector A, which becomes equals to A. Now, we will see about the unit vector. We will discuss about the unit vector. A unit vector is a vector of unit magnitude. A unit vector is a vector of unit magnitude, or a vector which has unit magnitude in the direction of a given vector, which has unit magnitude in the direction of a given vector. A unit vector is a vector of the unit magnitude in a direction of the given vector. It is represented by a cat. A cat. This is the sign of cat. So unit vector a cat is given by vector divided by its magnitude. Unit vector is found by vector divided by its magnitude. In the direction of x, the unit vector is given by I cap. In the direction of y, the unit vector is given by j cap. And in the direction of z, the unit vector is given by k cap. So unit vector gives the direction, and a vector divided by its magnitude gives the unit vector. In x direction, I cap is the unit vector. In y direction, j cap is the unit vector, and in z direction, k cap is the unit vector. Now we will come to the topic kinematics. So firstly we will see what is kinematics.
Kinematic is the branch of mechanics. Kinematics is the branch of mechanics. Kinematics is the branch of mechanics. And what is mechanics? So mechanics is the branch of physics. Mechanics is the branch of physics. So kinematics is the branch of mechanics, and mechanics is the branch of physics in which we study the body is at rest or in motion. Kinematics is the branch of mechanics, and mechanics is the branch of physics in which we study the body is at rest or in motion. So we can understand in this way. Mechanics consists of two parts. One is called statics parts and other is called dynamics parts. Mechanics consists two parts, statics parts and dynamics part. Static means the study of the particle. Study of the particle or body at rest. Mechanics consists two parts, statics parts and dynamics part. Static part means the study of the particle or body at rest. Dynamics means study of the particle. Study of the particle or body in motion. So in a statics part we study the particle or the body is at rest, and in dynamics part study of the particle or body in motion. Again dynamics consists two parts. One is kinematics and the other is proper dynamics. Dynamics proper. Kinematics and dynamics proper. Dynamics proper. So dynamics again consists two parts. One is kinematics and other is dynamics proper. In kinematics we study the motion of the particle without knowing the cause. In kinematics we study the motion of the particle without knowing the cause of motion. In kinematics we will study the motion of the particle without knowing the cause of the motion, and in dynamics proper we study the motion of the particle with knowing the motion of the particle with knowing cause of the motion. So mechanics consists two parts. One is statics part, other is dynamics part. In the statics part
we study the of the particle or body at rest. In dynamics part, study of the particle or body in motion. Dynamics again consists two parts, kinematics and other is dynamics proper, kinematics motion of the particle or the body with knowing the cause of the motion, and in dynamics proper without knowing the cause of the motion, and in dynamics proper we will study the motion of the particle with knowing the cause of the motion. काइनेमेटिक्स को स्टडी करने के पहले हम एक चीज और देखेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तो एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन आर नॉट पॉसिबल. Absolute rest or absolute motion are not possible. Absolute rest या absolute motion पॉसिबल नहीं है. किसी बॉडी के लिए कोई बॉडी रेस्ट में हो सकता है और अनदर बॉडी के लिए वही बॉडी मोशन में हो सकता है. when we say that the body is at rest or in motion, when we say that the body is in rest or in motion, when we say that the body is in rest or in motion, then it means that when we say the body is at rest or in motion, then we say that the body is in rest or in motion. Then it means that the body is in rest or motion with reference to the other body. जब हम ये कहते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, इसका मतलब कि वो बॉडी रेस्ट या मोशन में किसी दूसरे बॉडी के रेफरेंस में है. एज फॉर एग्जाम्पल, अगर टेबल पे बुक रखी है तो वो बुक टेबल के रिस्पेक्ट में और अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है. लेकिन अगर हम उसी बुक को मून से ऑब्जर्व करें तो वो बुक हमें मोशन में फील होगा. वो बुक हमें रेस्ट में नहीं दिखेगा, वो हमें मोशन में दिखेगा. तो टेबल के रिस्पेक्ट में जो बुक है वो तो रेस्ट में है, लेकिन किसी अदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, किसी मून से जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमें मोशन में दिखता है. सो इफ द बुक इज केप्ट ऑन ए टेबल, इफ द बुक इज केप्ट on a table, if the book is kept on a table, then the book is at rest. Then the book is at rest with respect to
with respect to table or the earth। अगर हम ये कहते हैं कि टेबल पे बुक रखी है, तो जो बुक है वो टेबल के रेस्पेक्ट में या अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट पोजीशन में। बट व्हेन वी ऑब्जर्व द सेम बुक, बट व्हेन वी ऑब्जर्व the same book from the reference of the moon, when we observe the same book from the reference of the moon, लेकिन जब हम सेम बुक को मून के रेफरेंस में हम देखते हैं, then it looks like in moving position, then it looks like in moving position। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने देखा कि कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होती। किसी एक बॉडी के रेस्पेक्ट में अगर वो रेस्ट में है, हो सकता है किसी दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में वो मोशन में हो जाए। जैसे टेबल पे कोई बुक रखी है, तो वह बुक टेबल के रेस्पेक्ट में या अर्थ के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में है, लेकिन हम जब रेफरेंस मून को लेते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में वो हमें मूविंग पोजीशन में अपीयर होती है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए? व्हाट आर द नेसेसिटीज फॉर द फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होगी। पहले रेफरेंस बॉडी और ऑब्जर्वर। फर्स्ट रेफरेंस बॉडी और ऑब्जर्वर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी? हमें दो बातों की आवश्यकता होगी, दो चीजों की आवश्यकता होगी। फर्स्ट इज रेफरेंस बॉडी या ऑब्जर्वर, सेकेंड इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम। What is coordinate system? So coordinate system, it may be a rectangular coordinate system, polar coordinate system, or geographical coordinate system. Geographical coordinate system। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। उसमें फर्स्ट इज रेफरेंस बॉडी और ऑब्जर्वर एंड सेकेंड इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हो सकता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हो सकता है, और ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हो सकता है। अब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझेंगे। तो सपोज कीजिए देयर इज अ 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सपोज देयर इज अ पार्टिकल और इंसेक्ट मूविंग। अब इसकी पोजीशन, सबसे पहले हमें इसकी पोजीशन, इसके कोऑर्डिनेट को फिक्स करने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट के पहले हमें इसकी पोजीशन को बतानी पड़ेगी। तो अगर हम इस पॉइंट को, इस पार्टिकल को एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेते हैं, 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने डिसाइड किया फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा क्या था? ऑब्जर्वर। तो
हमने ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया x, y और z, और ऑब्जर्वर को यहाँ पे फिक्स कर दिया ओरिजिन पे। अब हम इस पार्टिकल की पोजीशन को ऑब्जर्वर से O से देखेंगे, इस पार्टिकल की पोजीशन को। तो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और उसकी स्टडी करनी है तो हमें दो चीज़ों की आवश्यकता हुई। एक तो रेक्टेंगुलर सिस्टम, जैसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर सिस्टम लिया, और उसके बाद हमने एक ओरिजिन को फिक्स किया और यहाँ पे हमने ऑब्जर्वर को बैठाया O पे, ऑब्जर्वर। अब ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो हमें पता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में P पॉइंट की पोजीशन होगी x, y, z, और OP इज द पोजीशन वेक्टर। सो OP इक्वल्स टू R, OP वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर। दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, and the coordinates of P is x, y, z. So it is written as, this is R vector. So R vector equals to x I cap plus y j cap plus z k cap. तो इस तरह से हमने इसे रिप्रेजेंट किया, इसकी पोजीशन को। If the position of the coordinate changes with time, then the particle is said to be in motion. अब अगर if the position of the particle, if the position of the particle changes with time, if the position of the particle changes with the time, जैसे P पॉइंट की पोजीशन x, y, z है, और अगर P पॉइंट की पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज होती है, if the position of the particle changes with the time, then the particle is said to be in motion. अगर P पॉइंट, अगर पार्टिकल P की पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि पार्टिकल जो है वो मोशन में है। अदरवाइज इट इज इन रेस्ट, अदरवाइज इट इज इन रेस्ट। और अगर टाइम के साथ साथ पोजीशन, पार्टिकल की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रही है तो हम ये कहेंगे कि पार्टिकल जो है वो रेस्ट में है। एंड इफ ऑल द कोऑर्डिनेट्स चेंजेस विथ टाइम, if all the coordinates changes with time, if all the coordinates changes with time, then the motion is called three-dimensional motion. Then the motion is called three-dimensional motion. Three-dimensional motion. अगर टाइम के साथ साथ पार्टिकल के तीनों कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है, यानी x में भी चेंज हो रहा है, y में भी चेंज हो रहा है और z में भी चेंज हो रहा है, तो इस तरह का जो मोशन होगा उसे हम थ्री डायमेंशनल मोशन कहेंगे। If only two coordinates of the particle changes with time, then the motion is called two-dimensional motion. Then the motion is called two-dimensional motion. अगर कोई से भी
दो कोऑर्डिनेट टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं तो हम मोशन को टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे। एंड इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट, इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट, if only one coordinate changes with time, then the motion is called one dimensional. Then the motion is called one dimensional. और अगर एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, any one of the coordinate changes with time, then the motion is called one dimensional motion. So if all the three coordinates changes with time, x, y and z, all these three are changes with time, then the motion is called three dimensional motion. If any two of these coordinates changes with time, then it is called two dimensional motion. If any one of the coordinate changes with time, then it is called one dimensional motion. In next video we will see about distance, displacement, speed, velocity.